Good morning, everyone. In today's session, we are going to see how to send a PDF or a Word document through the email using the eSociety software. For this, first we have to go to this tree, then click on Utility. In Utility, select Email Setting. Click on this setting. Here you can see for sending the PDF or any documents on a mail other than bill, you have to create a first general setting. For this you have to click on add. I already created one general setting. Here you can see by double clicking in it, I'm going to edit it. In general, in category you have to select a general setting. After that you have to enter the subject for that email. When you are going to send that document through the email, then here in subject you have to enter the subject. In text body you have to enter the body of that text. You have to enter here. After that click on save. This is must setting. You have to verify that आपने यहाँ पे जनरल की सेटिंग की हुई है या नहीं. This is first thing. Now we have to go to reports. In reports go to society. In society scroll down. You will see here miscellaneous. Click on this option. Now click on general. Here you can see the filter. If you want to send particular document to the particular member only, then you can select the filter here. Like select the building, then wing, then unit number. I selected this unit number A101. Now we'll go to that flat shop detail of that member. This A101. Make sure that all the details of that member you have filled. Like this email ID is here. Now we'll see how to send the documents using the mail. For this, click to select file to send, email or WhatsApp. Click here. Select the document which you want to send on email. Select that document. After that, click on send email. Here we can see process finished. Click on OK. Now we will verify it. We'll go to send box. Here we can see 10:56. This mail goes, which the text we have written in that setting. Please find attached document here. वो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है और जो भी हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट और ये टेक्स्ट उस मेंबर को चला गया फॉर यूनिट नंबर A101 जिनका हमने ईमेल आईडी डाला था. अगर आपको सब कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वर्ड या फिर PDF फाइल सभी मेंबर को एक साथ भेजनी है तो आपको ये फिल्टर नहीं सिलेक्ट करना है. लाइक मैंने ये क्लोज किया, रिपोर्ट सोसाइटी में गई. आफ्टर दैट गो टू मिसलिनियस, गो टू जनरल, then directly select that document and click on send email. In this way you can send that particular document to all the members. Now same situation is for the sending WhatsApp. You have to select the document and click on send WhatsApp, then WhatsApp will go to that particular member. Now we'll see the second scenario in which we will see how to send the text message through the email in eSociety software. For sending text message, can go to here, tree, utility, email setting. जो भी आपको टेक्स्ट भेजना है मेल पे, then you have to click on this general, then edit the form. Enter the text in subject. Reminder for maintenance bill. फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी में डालेंगे हम प्लीज
Bills on time. Please pay bills before due date to avoid interest. Now save it. अगर आपको सिर्फ ये वाला टेक्स्ट ही मेल पे भेजना है तो यहाँ पे जनरल में आके सब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉडी डालेंगे और इसको सेव करेंगे. नाउ क्लोज इट. देन अगेन वी विल गो टू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट. वी विल गो टू रिपोर्ट सोसाइटी. Scroll down, go to miscellaneous. In general, now I'm going to send it for only one particular member. So मैं यहाँ पे filter select कर रही हूँ. After that, click on send email directly without selecting the document. Send email. Here text will come. Sorry, you have not selected any file. Do you want to send only the text message? Then click on yes. In this way, only text message will go to that particular member. We will re-verify it. Here you can see हमने जो अभी टेक्स्ट भेजा था, प्लीज पे योर बिल्स बिफोर ड्यू डेट, ये वाला टेक्स्ट उस मेंबर को चला गया है. इन दिस वे, यूजिंग दिस ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर, आप अदर देन बिल्स कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको भेजना है मेल पे फॉर मेंबर्स, आप यहाँ पे जनरल में आके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके भेज सकते हो. या फिर आपको सिर्फ मेल भेजना है, आपने ईमेल आईडी सभी मेंबर का डाला है, आपको मेल करना है सभी मेंबर को पर्टिकुलर टेक्स्ट, देन आप वो सिर्फ टेक्स्ट भी सभी मेंबर को भेज सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन.